Hello and welcome to our free and enjoyable class by Anwesha Ghosh Academy, an online school for all. Before starting our today's discussion, I want to share some experiences from our daily life. That is, we regularly notice some objects, that means some non-living bodies or some living organisms. Some are moving and some are stationary. Moving का मतलब है जो चल रहा है और stationary का मतलब है जो चल नहीं रहा है, जो स्थिर है. फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स है जैसे कि लैम्प पोस्ट, इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक पोस्ट, ट्री, बिल्डिंग, और आप लोगों के अन्वेषा मैम भी अभी बैठे हैं ऐसे स्थिर. तो सभी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के अंदर आता है. whereas the moving objects like some running train, running car, blowing air और some other objects, सभी planets जानते हो तो सभी planets भी moving है. they continuously move around the sun. तो हमारे डेली लाइफ में ये स्टेशनरी और मूविंग ऑब्जेक्ट्स का काफ़ी सारे जगहों में एप्लीकेशंस है. काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स अराइज करता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, वो सॉल्व करना पड़ता है. तो ये मूविंग ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है उसके बारे में हम लोग अभी आज डिस्कस करेंगे. दैट इज मोशन. सो लेट्स टॉक अबाउट द चैप्टर मोशन from class 9 CBSE-Science. Under science, it is from physics portion. Okay, so let's start this chapter, motion. So what do you mean by motion? Now, look at this picture. Here, this is a road and it is a house, it is a tree and it is a car, moving car. कार का ड्राइंग मैम बहुत ही बुरे ड्रॉ किए, ऐसे ड्राइंग कभी भी मत करना. एनीवेज, समझने के लिए ये ही काफी. समझदार को जैसे कि इशारा ही काफी होता है. वैसे कि आप लोग भी बहुत ही इंटेलिजेंट हो, इस पिक्चर को कैच कर पाओगे. हियर इट इज अ मूविंग कार एंड आफ्टर सम टाइम इट्स पोजीशन विल चेंज इनटू दिस प्लेस. ओके, तो ये रनिंग कार ये मूव कर रहा है, एक ड्राइवर इसको चला रहे हैं और कुछ समय बाद इसका पोजीशन इधर से इधर आया. जैसे कि इधर कार चल रहा है और इधर से इधर. तो कार तो स्थिर नहीं है. कार का ये जो चलने के जो स्टेट, फिजिकल स्टेट, यही है मोशन. तो मोशन का डेफिनेशन क्या हम लिख सकेंगे? लोग, motion is the state of movement of a moving object. अब डेफिनेशन इतने दूर बोलने के बाद खत्म नहीं हुआ, क्योंकि देखो, ऐसे तो हम सभी लोग तो मोशन में है. जो अर्थ में रहने वाले सभी ही नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि अर्थ तो खुद इटसेल्फ इज मूविंग अराउंड द सन. ठीक है, तो मोशन का डेफिनेशन लिखने के समय एक स्टैंडर्ड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना पड़ेगा ही पड़ेगा. नहीं तो हम सब लोग ही तो मोशन में है, चाहे वो स्थिर हो या चल रहे हैं. हाँ, लेकिन स्थिर को हम स्थिर बोलेंगे, ये चलने वालों को चलने वाला ही बोलेंगे जब तक हम लोग एक स्टैंडर्ड पोजीशन में रहने वाला स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ उसको कंपेयर करें. सो आफ्टर दैट वी मस्ट हैव टू राइट दैट with respect to a
standard stationary object like building, tree, etc. For example, in this picture, the car is moving. The moving car is in the state of motion because we are considering its state with respect to these stationary objects like the stationary house or heart in this picture and the stationary tree. So, motion में क्या क्या होगा? What phenomena will happen in motion? Let's see. तो मोशन में एक चीज है भैया जो एकदम कंपल्सरी है, वो होगा ही होगा. In every types of motion, these phenomenon must happen. That is the change of the position of an object. The change of the position of an object from देख पा रहे हो, okay, from one place to another. ये होगा ही होगा. लेकिन और कुछ कुछ एडिशनल फिनोमिना है, कुछ कुछ एडिशनल इवेंट्स है. फिनोमिनन का मतलब इवेंट, प्लूरल है फिनोमिना और सिंगुलर फिनोमिनन. तो वो एडिशनल फिनोमिना के अंडर फॉर एग्जाम्पल चेंज ऑफ द डायरेक्शन. अब देखो, डायरेक्शन चेंज हर मोशन में होता नहीं है. जैसे कि इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं, ये कार इस पोजीशन से इस पोजीशन में गया, तो डायरेक्शन क्या चेंज हुआ? ये तो मैप में हम जैसे कि करते ना, ये ईस्ट, फिर वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सब में जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ाऊंगी ये सब डायरेक्शन के बारे में आएगा. फिर भी मैं लिख दे रही हूं फॉर योर कन्वीनियंस. लुक एट दिस. ये है ईस्ट. मैं जहां पे बैठी हूं उसके मेरे राइट साइड में. फिर ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ. तो ये कार पोजीशन चेंज किया, it one from this place to this place, but the direction is not changed. लेकिन अगर ऐसा कुछ सिचुएशन अराइज करता, जैसे कि देखो ये कार चल रहा है ऐसे, फिर ये ऐसे डायरेक्शन चेंज किया, फिर सामने से ऐसे ये जा रहा है, ठीक है, फिर पीछे ऐसे यू टर्न करके ऐसे ऐसे आ रहा है. तो डायरेक्शन चेंज हो सकता है और नहीं भी चेंज हो सकता है. सो इधर हम लिख रहे हैं आदर में डायरेक्शन में और may not be changed. अब क्या होगा? शेप एंड साइज चेंज भी हो सकता है. कैसे? एक रबर बैंड, वो तो इलास्टिक है ना, तो रबर बैंड को हम ऐसे बाल बंद टू टाई आवर हेयर वी यूज रबर बैंड. तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं. तो देखते हो शेप साइज चेंज होता है. तो वो तो स्थिर नहीं है, तब तो मोशन में ही है ना. ये मेरे ये बालों का जो क्लिप, तो ये भी मोशन में जब है, देखो इसका शेप चेंज हो जा रहा है, होते जा रहा है ना. लेकिन जब ये कार मूव कर रहा है तो इसका शेप और साइज कुछ चेंज नहीं होता. तो ये भी डायरेक्शन चेंज की तरह ही शेप और साइज चेंज भी नॉट मैंडेटरी, मे और विल नॉट बी हैपेंड. तो चलो लिखते हैं
shape, and size may or may not be changed. ठीक है, तो कंपल्सरी में पोजीशन चेंज और नॉन कंपल्सरी में ये सब आदर के अंदर. ठीक है, तो ये रहा पूरे मोशन का एक जनरल इंट्रोडक्शन, प्लेन एंड सिंपल. इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है नहीं, लेकिन ये सब छोटी छोटी बातों को अगर हम नहीं जानेंगे तो इसके बाद हायर लेवल में जो मैं डिरेक्शन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिसेलरेशन और डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाला काफी सारा प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या ग्राफिकल प्रॉब्लम्स वो जब कराऊंगी तो ये इंट्रोडक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी लगेगा. अब मोशन तो बहुत कुछ तो मैं बोली हूँ. मोशन का ऑपोजिट क्या है, मतलब जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स में रहने वाला ऑब्जेक्ट्स का स्टेट, दैट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट. हम लोग तो एक्टिविटीज बहुत सारे करते करते जब थक जाते, पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, तो तब जैसे रेस्ट लेते हैं, सो जाते हैं, तो वही स्टेट का नाम है रेस्ट, स्थिर. So the opposite term of motion is rest. That is the state of the stationary objects. So the state of the stationary objects is rest or resting state, and the state of the moving objects is called motion. So let's summarize the whole introduction on motion. CBSE-IX-Science under physics portion, we have thus introduced this chapter, motion. What do you mean by motion? Motion is the state of movement of a moving object with respect to a standard stationary object like building, tree, etc. Or alternatively, we can say that motion is the change of the position of a moving object from one place to another with the change of time with respect to some standard stationary objects like building, tree, etc. Like from this picture, we can see that this car is running and changing its position from this place to this one after some time, like this. And what will happen in motion? The compulsory phenomenon that must occur in motion, in every types of motion, is the change of the position of an object from one place to another. It is must. And other additional phenomena that may or may not occur, that are direction may or may not be changed. Suppose this car is moving like this one, direction is not changed, it has been maintained towards east, but with due course of time, the movement of car has changed its direction like this. Then direction changing occurs in motion, and shape as well as size may or may not be changed. For example, we are tying up our hair by using rubber band, then we can see the elasticity of the rubber band and the changing of its shape and size. Using these hair clips, the shape also been changed. So direction, shape and size changing are not compulsory. Sometimes they occur in motion. And the opposite term of motion is rest. That is the state of the stationary objects. That's all for today. After the general discussion of motion, we will further discuss part by part the remaining portions under this chapter, like distance, displacement, speed, velocity, acceleration, deceleration, and finally our main motive is to solve the numerical problems, graphical problems, and some easy, moderate, and especially some critical question answer solving. Hope you are benefited and will be benefited. If you like this teaching video, please subscribe my channel and share with your family and friends. Thank you.